I think Pooja is playing me minus me not knowing martial arts. I think that's about it, you know. We have a Chuck Norris, we have a Donnie Yen, we have Jet Li, we have a Tony Jaa, we have a Steven Seagal and Van Damme and all of them. But there is something markedly different and which can't be just his speed. I think, I mean, I am not a gay, but he is the only guy I want to kiss. Hi, Sashrikal, Nali copy to all and welcome to ETimes wherein we bring you up close and personal with the all loved celebrities. And आज जो दो सितारे हमारे साथ हैं वो इंट्रोडक्शन नीडेड, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने ट्रेलर में इतना कुछ बोल चुके हैं कि मैं बोलूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा. So we have Gopal Varma with us. We have the very beautiful girl with us. Hi guys, I'm Pooja Bhalekar. एंड शी इज समबडी. अभी आप देख रहे हो इतने प्यारे कॉस्ट्यूम हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्रिटी लग रहे हैं और जब एक्शन करने पे आते हैं तो अच्छों की एंड बच जाती है. वाओ. So first of all, kudos to you for doing that. And sir, you are coming with an action movie with a female in the lead, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम देखा जाता है. So that खास करके I think this is the first of its kind because a girl having a gun or a knife or something is different. True. But actually she doing fights like a man. I mean in terms of what is the territory of a Tiger Shroff or a Vidya Jambal, that I think is never happened before. Yeah. That is true. This is amazing, the concept that you two are coming up with. And I've seen in the trailer you are obsessed with Bruce Lee. Yeah. I have read somewhere that you loved Bruce Lee. Yes. I've seen Enter the Dragon. तो हम ये नहीं बोल रहे कि Bruce Lee की बायोपिक है. You made that clear. Yeah. क्या ये आपकी बायोपिक है in a way because you were obsessed with it. Yeah. So is it in a way? Yeah, I think Pooja is playing me minus me not knowing martial arts. I think that's about it, you know. Yeah. Yeah. Wow, that is so beautiful. And Pooja, from you, I want to know. I read that you're a taekwondo artist, Yeah. right? And so ये जो जर्नी थी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात हम सब करते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए एंड एवरीथिंग, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली इस चीज़ को परस्यू करते हैं. सो हाउ डिड योर जर्नी, बिकॉज जनरली लोग बचपन से बोलते हैं कथक सीख लो, Yeah. भरतनाट्यम सीख लो. बहुत कम मम्मी पापा होते हैं जो बोलते हैं ताइक्वांडो सीख लो, कराटे सीख लो. सो हाउ डिड दैट हैपन? डांस भी सीखा है थोड़ा बहुत बट बट ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्ट था वो इसी तरफ था, मार्शल आर्ट्स की तरफ ही था. और एक बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एशियन गेम्स में. तो काफ़ी ऐसे छोटी मोटी अचीवमेंट्स रही है और जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा टाइकोंडो में वो काफ़ी मुझे हेल्प करा इस फिल्म को करने में. Wow, that is wonderful. So, taekwondo, karate, judo, kalaripayattu, we have different forms of martial arts, right? And mixed martial art in itself is a different ball of game. Yeah. तो जब लोग इन सब चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, सब कुछ ऐसे खिचड़ी बना के बोलते हैं कि हाँ ये भी कराटे है, वो भी ताइक्वांडो है, तो तब कितना गुस्सा आता है अंदर से, क्या बोलते हो उनको समझ. In fact, what you said is there in the film because actually, see, technically Bruce Lee was against karate. Okay. And because he comes from like a background of kung fu, but he later made his own style called Jeet Kune Do. And when Bruce Lee's films became massive hits, people thought it was karate, which he was against, and everyone started karate schools. Yes. In the film also, Pooja's character constantly keeps correcting others that it is not karate, it's Jeet Kune Do. Yeah. Wow. Yeah. लाइफ में भी कितनी बार करेक्ट किया लोगों को? काफ़ी टाइम, मतलब गुस्सा तो नहीं आता जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइक्वांडो को कराटे से, जब कंपेयर करते हैं या मतलब ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में, तो गुस्सा तो नहीं आता. बट अभी आदत हो गई है अभी. एंड फिल्म में भी मैं वही कर रही हूँ, जो भी जितनी बार भी कहा जा रहा है तो मैं उनको करेक्ट कर रही हूँ कि मतलब कराटे नहीं जीट कोंडो है. तो काफ़ी फ़न अब थोड़ा बहुत ही फ़नी लगता है. मैं चाहती हूँ वो कहीं ना कहीं चेंज हो, लोगों को बहुत ही इस चीज़ के बारे में पता चले कि कौन सा गेम क्या है, वो नॉलेज हो कि हर मार्शल आर्ट्स के इसको वो एक ही नाम से ना पुकारे. वो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि चेंज हो, कि एक अच्छी नॉलेज हो लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में. That is true. And I believe कि शायद इस मूवी के बाद things will change and people will get to know the difference between the different forms that we have, because we have a number of forms itself in India. So I think it makes that change also. और रील पे जो आपने धुलाई कुटाई सब लोगों की
I remember I once हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं वायलेंस ओके सो बट आई रिमेंबर स्कूल टाइम पे मैंने जो मुझे मेरा पहली बार आई गॉट माई ब्राउन बेल्ट तो मैंने बहुत शो ऑफ किया था मैंने भी किसी को पीटा था आपने कभी ऐसा कुछ किया स्कूल कॉलेज में कभी कोई पंगे ले रहा हो सो यू नो यू टोल्ड देम आई एम नॉट द डैमसेल इन डिस्ट्रेस एंड यू टुक द चार्ज कभी ऐसे हुआ नहीं बट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जो पहले भी मैं मेंशन कर किया था अभी मैं कहीं जा रही थी अपने मॉम के साथ और किसी ने कमेंट किया उनके ऊपर तो काफ़ी गुस्सा आया और मैं उनके पीछे भागी उनको मारने के लिए बट दैट गाय वाज ऑन द बाइक तो वो मेरे हाथ से छूट गए थे वो एक थोड़ा पछतावा है कि काश थोड़ा और तेज़ भाग लेती वो सारी जो कसर है वो मैंने फिल्म में निकाली है कहीं ना कहीं सर आपको कहीं पे ऐसे कट जान के ऐसे बोलना पड़ा कि सुनो कैमरा पे ही करना है सच में नहीं See, that's a point. One of the reasons मैंने ये लड़की नाम से रखा है मैं एक सोच रहा था अगर see all the time men look at a woman as a weaker sex और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकती है बेचारी लड़की है ऐसा लोग को सोच है तो मेरा एक ये पॉइंट है कि अगर निर्भया का टाइम पे वो बसलों में जो लोग जा रहे थे और काश वो लड़की की जगह अगर उधर पूजा हो तो क्या होता that's interesting scenario to see you know what is I think that basically tells you that every girl has to have some minimum kind of a self-defense maybe not extensive training in martial arts maybe some kind of weapon maybe some kind of attitude jo to deal with a situation like that because that happens so many times yeah लाइक सर जो सेड कि मे बी उतना प्रॉपर फुल फ्लेज ट्रेनिंग नहीं कुछ मूव्स कुछ ट्रिक्स जो हमेशा हैंडी रहने चाहिए सो कैन यू टेल अस समथिंग कोई ऐसा मूव कोई ऐसा ट्रिक दैट एवरी गर्ल शुड जस्ट नो कि अगर ऐसे भी लगे कि थोड़ा बहुत भी वैसा सिचुएशन आ रहा है तो शी कैन जस्ट यू नो tables can be turned some way that way I think first of all what I do in my life you know I avoid conflicts you know and मैं बहुत ही aware रहती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये सही नहीं है उस सिनारियो में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना फंसूँ तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी गर्ल्स हैं हमारी जो ट्रैवल करती है अलोन जॉब के लिए या किसी भी मतलब स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम के लिए मैं चाहती हूँ वो अवेयर रहे हमेशा और वो हम लोग फिल्म में भी दिखा रहे हैं कि ब्रूस ली की जो थिंकिंग है जो वे ऑफ लाइफ है जो अवेयरनेस उसने मतलब शेयर किया है अपने लाइफ टाइम में वो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ इंस्पायर करे लोगों को तो वो एक अवेयरनेस होना चाहिए हर लड़की के अंदर कि कैसे वो अपने आप को उस सिनारियो में ना डाले एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने विल पावर से भले ही उनको फुल्ली मार्शल आर्ट्स नहीं आता हो तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करे वो विल पावर वो इनर जो स्ट्रेंथ होती है वो हर लड़की में होती है वो बस बाहर निकाले वो और उसको यूज़ करे See, here the point is I slightly disagree with the first point of Pooja. See, avoiding confrontation is, I think that's not, because I think that is actually fundamentally contradicting the women empowerment and gender equality. See, आज की डेट में what is the whole thing? Like women should not come out in the night. Why is she alone there? Why is she not with some family member? So this is enslaving women. Because if she has an equal right in the country and the government's responsibility is to take part of each and every person, whether it's a man, woman or a child, their security. But sometimes in an uncontrollable situation, maybe it cannot be 100% practiced in reality. So for you to be actually have a reasonable kind of a, some kind of a technique or whatever, that you, if you are in that situation, what can you do? Someone can go as extreme as Pooja to learn something like this, and someone else can do something else, you know. But I think the point is, which is what I loved, what that whole thing of Deepika Padukone thing, you know, my wish, you know, is in the context. I think you cannot impose a restriction on a woman just because she is a weaker sex. That I think is contradicting everything we are shouting about women empowerment. Yeah. But at the same time, I completely understand the point that you have given right now. But at the same time, so उन्होंने एक point रखा था that you should have this sense of awareness that what is happening around you. No, that's exactly what I meant, in the sense of if you're aware that something like this can happen, how are you prepared? Yeah. That's exactly the point. So I love that point, and I think आजकल के time पे since we are so much into our social media, phones and everything, हमें in general भी चीज़ें पता नहीं चलती हैं.
But coming back to our movie, before I go off the topic, Bruce Lee, I too love his movies. I loved Enter the Dragon. I want to ask you, sir, agar aaj ke time pe he would have been here, what would be a couple of questions, just एक दो सवाल जो आप उनसे जरूर पूछना चाहते हैं? Nothing left for me for what I don't think I understand about Bruce Lee. But it took me a long time to realize it. Because the point is, I always studied what is the difference between him and the other martial artists. See, we have a Chuck Norris, we have a Donnie Yen, we have Jet Li, we have a Tony Jaa, we have a Steven Seagal and Van Damme and all of them, but there is something markedly different and which can't be just his speed. It can't be just his power, because I don't believe there more than 10-15% difference in their punching power or whatever you call. It is his personality, it is his screen presence, it is his eyes, he understands the power of his stay. You know, he will give the audience the time to react to his punch. You know, he makes them relish it. He doesn't do it in a flurry of things where it completely gets mixed up and you kind of lean back in the seat and you start eating your popcorn. So he would counter it with the other artists' expressions to X to Y to Z, and more than anything else, he's real. He absolutely makes you believe this can happen. You know, this can happen. A fight can like this can happen in real, which is not what none of them are able to achieve. In spite of them having the time to learn from him for the last 40 years, which is one of the biggest mysteries to me. I haven't seen action directors understand. I haven't seen action stars understand. They just go into a visual, unbelievable stunts of jumping into the air and superhuman defying gravity stunts, which work for their own reason. But none of them are remaining, and Bruce Lee remains for 40 years, which means there is something fundamentally much better working there. Yeah. My question wasn't like that. Yeah. What would you like to ask him for the movie? As a fan boy, kind of. What would be that one thing that you would like to ask him? It was aimed that way. I don't know. I'm not able as a fanboy to ask him a question. I find it. Maybe you'll just give him a token of appreciation in a way. Yeah. So I think. I'm not a gay, but he'll be the only guy I want to kiss. So I would like to kiss him for his very existence. Wow. Yeah. Beautiful. And now on this point, I genuinely was thinking of some other question, but now that you said you wanted to kiss Bruce Lee and you took us off the topic again, I forgot my next question. Okay, aa gaya yaad. So we were talking about the hold, the space, the time given. Whenever we see action, we mostly see wo hi ki maar dhaad hai, tez hai, kick kiya, punch kiya, but it's mostly about the control of your anger as well as the control of whatever move that you're making. So how much of a balance was learning martial art form brought in your life? एक्चुअली मार्शल आर्ट्स सीखने से पहले मैंने शुरुआत अपनी जो की थी वो योगा से की थी, तो कहीं ना कहीं जो वो योगा में सीखा हुआ जो भी चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी हेल्प करी यहाँ पे बैलेंस के लिए. और मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करने से पहले मैं जो एथलीट जो भी और चीज़ें 100 मीटर रनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, उन सब में भी पार्टिसिपेट करा करती, तो वो जो स्ट्रेंथ, वो स्पीड और स्टैमिना था वो कहीं ना कहीं था मुझ में. तो ये दो चीज़ें कंबाइन करके जो भी नॉलेज था मेरा वो मैंने मार्शल आर्ट्स में यूज़ किया और वही मैंने फिर फिल्म में यूज़ किया. This is beautiful. This I didn't know about you, that you were first into yoga and then you got into this.